Next topic is the capital and its environs. We are having this different subtopic also there. So first subtopic is the water resources. You know what is the prominent or what is the striking feature of Vijayanagara Empire? That was this Vijayanagara Empire was located on the natural basin formed by Tungabhadra River. Vijayanagara was located in the basin of Tungabhadra River. Now you will think that what is important for that, means क्या इतना बड़ा चीज़ क्या है, अगर है तो क्या है, because the rulers can build large embankments and reservoirs to store, collect water. Because you know well that that time people are engaged in agriculture, they need water. So the kings, the rulers of Vijayanagara, they started to build embankments or dams across the river Tungabhadra, and reservoirs collected water, and these water they used for irrigation and other purposes. And apart that, see, they implemented arrangements for rainwater storing. Many tanks and canals also developed. Such tank, that is, they built Kamalapuram tank in 15th century. 15th century, they built a Kamalapuram tank, and this tank, the water that is used to irrigate nearby fields, and also conducted a channel to the royal center, because this Kamalapuram tanks fulfill the needs of the royal center, right? The needs of the royal center also fulfilled by this Kamalapuram tank. Notice points. And the another most prominent water resources or the canal, that was Hiriya Canal. Ruins of Hiriya Canal also found by the historians. So the water from the dams, they are channeled through the canal. Canal means a channel only, through the canal. And these water they used for irrigating the fields, agricultural field, as well as the urban core, urban complex and royal centers. Right? See the structure. This is the river Tungabhadra, embankments made, and afterwards the canal. This is a Hiriya Canal, and this land, this area is agricultural land. This they irrigated this also, this place also, that place also. Both the places they irrigated. And the land situated in the Hiriya Canal, means these places that separated the sacred center from the urban core. Urban core se sacred center ko separate kar de this area. And this water of Hiriya Canal, that is able to, that canal, water of this canal is able to irrigate the agricultural land as well as the urban core and royal center also. Right? And this was apparently built, means this Hiriya Canal was apparently built by the kings of Sangama dynasty. Next subtopic is fortifications and roads. Dear students, before explaining this, just I wanted to say one thing to you. Listen carefully, otherwise it will be very confusing and difficult. And read the topic also clearly. Before examining the city, various parts of the city, just have a look about the massive walls of Vijayanagara. Abdul Razak, who he was an ambassador from the rulers of Persia. They sent him to Calicut, that is Kozhikode in Kerala. And he was so impressed on the walls of Vijayanagara Empire, or the forts of Vijayanagara Empire. He mentioned about the forts of Vijayanagara Empire in his book. Normally, each kingdom or various kingdom having 1 or 2 levels of forts, kila, ek or do kila honge. But this Vijayanagara Empire having 7 line of fortifications. Think about the mentality of the kings. Their care about the people as well as the land. अब आप पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको बहुत क्या बोलेंगे, सोच के सुन के आपको बहुत आश्चर्य लगेगा कि इतना कुछ किया था उन्होंने विजयनगरा एम्पायर्स ने.
7 line fortification they have done. 7 line. It is very difficult for an enemy to reach the royal palace. 7 line of fortification. See, Abdul Razak mentioned about all these 7 line fortification, and also the walls also never mortar never used. Mortar means no mortar used. Mortar means cement. So कुछ cement वगैरह कुछ यूज नहीं किया. And the blocks wedge shaped है, because ऐसे एक जो है उसके ऊपर अगला ब्लॉक ऐसे बैठेगा ना, ऐसे बैठेंगे. एंड प्लास्टरिंग किया कहाँ से? अंदर से प्लास्टरिंग किया, मिट्टी से, अर्थ मटेरियल से प्लास्टरिंग किया. देयर इज नो सीमेंट, नथिंग दे यूज्ड. और स्पेशलिटी ये है कि दो किंगडम ऐसा है, तो यहाँ पे दोनों बड़ा सा हिल है, रॉकी हिल. सो उनको वॉल्स ऐसे हिल को टच करके ऐसे बना सकते हैं, मतलब जो वॉल बना सकते हैं. इवन फॉरेस्ट भी है, फॉरेस्ट ऑल्सो, मतलब दे टोटली सेपरेटेड, मीन्स वॉल से सेपरेट किया फॉरेस्ट को, एग्रीकल्चर लैंड को, रॉयल सेंटर को, अर्बन कोर को, सबको, सेक्रेट सेंटर को, सबको वॉल करके बना रखा है. And this Razak mentioned between the first, second and third layer or line, there was a lot of gardens, agricultural fields, etc. Even Domingo Paez, another person, he also described about Vijayanagara Empire. He saw that, he explained that the inner circle, outer circle से जो आपका वहाँ तक मीन्स रॉयल पार्लर सेंटर तक जाने के लिए, सिटी तक जाने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस करना है उसको. इनर सर्कल से जो बहुत डिस्टेंस कवर करना है. तो यहाँ से जाने के टाइम वो देख सकता है कि नंबर ऑफ एग्रीकल्चरल फील्ड्स वेयर द पीपल सो द राइस सोइंग कर रहा है. एंड ऑल्सो नंबर ऑफ गार्डन्स, मच अबाउट अबंडेंट वाटर इरिगेशन फैसिलिटीज, ये सब कुछ उन्हें भी मेंशन किया है. And contemporary archaeologists, अभी का archaeologists, they also given the statement that Vijayanagara, well, they got the evidences of the fortificated agricultural tracts, agricultural land को. मीन्स आप सोचो, एक राजा ने और आपका एक किंगडम जो एम्पायर्स ने अपने जो एग्रीकल्चर फील्ड को भी क्या कर दिया, फोर्टिफिकेशन कर दिया, संभाला है पूरा. इतने बड़े, छोटा मोटा नहीं है, बहुत ज़्यादा एरिया होगा, वो पूरे फोर्टिफिकेशन कर दिया. दैट मीन्स दे बाहर तो बड़ा फोर्टिफिकेशन है, साथ में अंदर भी सब जगह पे 7 लाइन में फोर्टिफिकेशन है. अपना एग्रीकल्चर लैंड का, अब अर्बन सेंटर का, रॉयल सेंटर का, इन सच्चे में सब जगह पे फोर्टिफिकेशन कर दिया. राइट. अब एक क्वेश्चन आ गया कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें, व्हाई डू यू थिंक एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट्स वर इनकॉर्पोरेटेड विद इन द फोर्टिफाइड एरिया? आप क्या, आपका मतलब अब ऐसे क्या सोच रहे हैं, ये लोग क्या सोच के रखा है कि जो क्यों इन्होंने एग्रीकल्चर लैंड को भी फोर्टिफिकेशन कर दिया? मेन ऑब्जेक्टिव, the main objective stage जो medieval time में, the main objective of the medieval sieges means the military operations, military actions, ठीक है, to starve the defenders, to starve the defenders. ये आपने कहीं सुना होगा कहानी वगैरह, टिप्पू सुल्तान का कहानी, जो ब्रिटिशर्स टिप्पू सुल्तान का जो किला के बाहर आकर के मतलब मंथक सेवरल, मतलब दिस ऑल्सो बिकॉज सबमिशन करने के लिए स्टार्व करेंगे, मीन्स आपको भूखा बिठाएंगे ताकि आप जो मतलब जो भूखे हो जाएंगे, मतलब कुछ दिन खाना खाएंगे, उसके बाद खाना खत्म हो जाएगा, फिर आप क्या करेंगे, बाहर आएंगे, लड़ाई करेगा तो आप 100% हार जाएंगे. दिस वाज द पॉलिसी, मेन ऑब्जेक्टिव था. ठीक है. एंड ये जो ये कंडीशन है ना, सेवरल मंथ्स तक, कभी कभी सेवरल ईयर्स तक, टिप्पू सुल्तान के साथ तो मंथ्स तक चला था. मीन्स ब्रिटिश लोगों ने बाहर आ गया, अंदर किला के अंदर टिप्पू सब लोग थे, लेकिन बड़ा सा ग्रैनरीज रखे थे उनके पास. वहाँ से ग्रैनरीज में क्या था कि ग्रेन्स वगैरह होता था, तो जनता को जितना भी जनता उन्होंने सबको सब बांट लिया, तो सब लोग खाना खा करके क्वारंटाइन, वी कैन से क्वारंटाइन, बाहर एनिमी, अंदर तुम किले में क्वारंटाइन. आज का क्वारंटाइन हमारा भी ऐसे ही है. नाउ वी आर इन क्वारंटाइन, व्हाई? बिकॉज बाहर एनिमी है, कौन है? कोरोना वायरस. सो हियर आल्सो द एनिमी आउटसाइड में, किले के अंदर वो लोग क्वारंटाइन में है, मतलब बाहर नहीं आ सकता, बाहर जाए तो वो अटैक होगा पक्का. सो किला का जो डोर है, गेटवे ओपन नहीं करेगा जब तक खाना वगैरह खत्म हो जाएंगे तब. टिप्पू का भी ऐसे हुआ था, खाना सब कुछ खत्म हो गया तब उसने ओपन किया, तब ब्रिटिश लड़ाई मतलब जो वॉर हुआ था. द सेम वे दैट टाइम, मेडिवल टाइम में जो सीजेस मीन्स मिलिट्री ऑपरेशंस स्टार्व करने के लिए छोड़ देते थे सेवरल मंथ तक.
ये विजयनगरा एम्पायर। एंड राजा लोगों ने क्या कर दिया, बड़ा सा ग्रैनरीज बना देंगे, वहां पर ग्रेन्स रखेंगे, ठीक है, ऐसा था। बट the rulers of Vijayanagara, they were not satisfied and they adopted and what expensive and elaborate strategy of protecting the agricultural tracts or fields. उन्होंने ग्रैनरी को बड़ा बड़ा ग्रैनरी बना करके वहां पर ग्रेन स्टोर नहीं किया, उन्होंने क्या कर दिया, बड़ा सा एग्रीकल्चरल फील्ड को भी एलाबोरेटली उन्होंने अपने किला बना दिया। हम तो यहाँ पर पूरा है, इतने बड़ा किला, तुम अपना करो, कुछ भी करो, करना अब बेफिक्र होकर के, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नोबडी विल कम, अटैक नहीं करेगा। अटैक करेगा तो पहले वहाँ बाहर का करना है, वहाँ अगर तोड़ दिया अंदर आ गया तो फिर अगेन किला इस तरह है। सो उन्होंने क्या कर दिया, इतना इलॉबरेटेड एक्सपेंसिव किला अगर ट्रैक्ट के अराउंड बना दिया। सेकेंड लाइन अगेन आगे फोर्टिफिकेशन वेंट अराउंड द इनर कोर ऑफ द अर्बन कॉम्प्लेक्स में बड़ा बिल्डिंग्स को, उसको भी किला बना दिया। एंड अगला लाइन क्या है, रॉयल सेंटर में पैलेसेस होंगे, मेजर जो बिल्डिंग्स होता है उसके सेपरेट मेजर बिल्डिंग्स होंगे ना, वो रॉयल कोर्ट, उसका अलग से वॉल होता है। किला तो है ऑलरेडी रॉयल सेंटर का अलग किला है, अंदर बिल्डिंग्स का भी सेपरेट जो वॉल्स वगैरह है, इतना मतलब हाई वॉल्स बना के रखा है। The fort was entered through well guarded gates। अगर फोर्ट में अगर तुम्हें जाना है तो पूरा well guarded gates है, वो that which link the city to the major roads। हर एक जो सिटी के डिफरेंट गेटवेज डिफरेंट रोड से कनेक्टेड है सब कुछ। And the gate also having the distinctive architecture, that architecture features also, that these features of the architecture that was introduced with the Turkish sultans। मतलब art historians they were instructing that this style was Indo-Islamic style, because Turkish सुल्तान ने लेके आया है जो दिस गेटवे का फीचर को क्या नाम इसका इंडो इस्लामिक फीचर्स बोलते हैं, मीन्स आर्किटेक्ट्स बोलते हैं। So this also an evidence for the relation between the Vijayanagara Empire and the Turkish sultans और मीन्स आपका डेक्कन सुल्तान्स। उससे लड़ाई, मैं पहले बोला था कि लड़ाई नहीं करते थे, साथ में लड़ाई भी करते थे, साथ में जो आइडियाज ट्रांसफर करते थे। सो द गेटवेज, द आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ द गेटवेज shows the relation between the Vijayanagara empires and the Turkish sultans, because they adopted the architecture of brought by the Turkish sultans, right? A number of roads constructed by the rulers of Vijayanagara, and the archaeologists have studied the roads within the city and those leading out from it. Generally, roads constructed or wound through the valleys, and they avoided that terrains. Most important roads are started from the temple gateways, lined by bazaars, connected to various places. So all these evidences we can see, the historians found the evidences of these roads and all. And dear students, today we are going to conclude this topic here, and tomorrow, next day, we are going to start the next topic, the urban core. Thank you.